ओके, तो यहाँ हम रिलेटिविटी की एक एग्जांपल, एक सिमुलेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रिलेटिविटी एंड हाउ रेफरेंस फ्रेम्स एक्चुअली चेंजेस द वेलोसिटी, मींस रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आसानी के लिए मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ट्रू वेलोसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, velocity of an object with respect to or relative to the ground is basically called true velocity। ठीक है, तो ये पहले की और बहुत सारी बुक्स में भी इस चीज को इसी तरह लिखा गया है। ट्रू velocity उस चीज को लिखा गया है, यानी वो ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट से हो या ग्राउंड के रिलेटिव से हो। ठीक है, सो अगर उसको ग्राउंड से रिलेट किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर मौजूद हूँ और यू कैन सी दैट कि मेरे रेस्पेक्ट से, बिकॉज आई एम अटैच टू द ग्राउंड, मेरे रेस्पेक्ट से दो यहाँ पर पर्सन है जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं। एक यारी है, द रेड वन, एंड एक जॉर्ज है। सो जॉर्ज की जो वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली -10 मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और जो यारी की वेलोसिटी है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब यारी की जो वेलोसिटी है वो चेंजेबल है, एज वेल एज जॉर्ज की वेलोसिटी चेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पोजीशन एंड टाइम ग्राफ है। सो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। सो रिमेंबर दैट के रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली चेंज होती है, सॉरी ट्रू वेलोसिटी, ठीक है, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट से होती है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटीज जो है बेसिकली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, जैसे ही रेफरेंस फ्रेम में चेंज करूंगा रिलेटिव वेलोसिटीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर अभी ऑब्जर्वर रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो ग्राउंड के हिसाब से इनकी ट्रू वेलोसिटीज क्या है, -10 मीटर्स पर सेकेंड जॉर्ज की, और यारी की जो है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव। ठीक है, दैट मींस इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स सी कि 1.5 1.6 सेकंड्स के अंदर क्या होता है इनके साथ व्हेन दे आर गोइंग टू बी मूव। ठीक है, एंड वी आर वाचिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। Now you can see that with respect to the ground, their positions are actually changing. ठीक है, George is actually moving towards negative or to the point zero, and whereas Yari is actually moving towards positive. ठीक है, with very much slower speed you can see that. So you can see that कि यहाँ पर क्या हुआ है, forget about this। ठीक है, because उसने ये पूछा है कि वो क्या स्पीड रखी जाए यारी की, तो so that they would be meet at one point in 1 second। ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड दे वुड बी मीट। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या स्पीड रखी जाए। ठीक है, इस वजह से वो आपसे कह रहे हैं। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो स्टेशनरी ऑब्जर्वर हैज बीन ऑब्जर्व कि यारी इज एक्चुअली कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन इट्स पोजीशन एंड गोइंग टू बिकम और अराउंड जीरो पोजीशन। ठीक है, और यारीज पोजीशन इज गोइंग टू बी, सॉरी जॉर्ज की पोजीशन में पहले बात कर रहा था, यारीज पोजीशन is going to be increased little bit, one can say 1 meter or 1.8 meters। ठीक है, you can see that कि at 1.5 seconds its की जो वो है position 1.8 1.6 के अराउंड है। ठीक है, यारीज की। सो you can see that कि जो इसका स्टीकनेस है वो हमें क्या बता रहा है, पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्टीकनेस है, दैट मींस स्लोप है, वो हमें वेलोसिटी बता रहा है। इसका मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, ट्रू वेलोसिटी, और यहाँ इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। नाउ अब अगर हम चेंज करते हैं पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए अगर हम दोबारा से इसकी स्पीड चेंज कर देते हैं, लेट्स से कि यारी वुड हैव नाउ 4 मीटर पर सेकंड is moving with 4 meters in 1 second। So what is going to be happen if they are going to be observed through observer that is actually at rest। ठीक है, like me is watching them। So now this Yari's speed is actually going to be increased and nothing is going to be changed in the speed of the um, George। You can see that there would be meet just earlier. Just earlier means they would meet before 1.5 seconds. Now they meet at 1.3 seconds, but they have to be meet 1 second in order to be complete this। So फिर मैं आपको ये एक्टिविटी का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, फिर आप इसको चेक कीजिएगा कि at which speed they would be meeting at each other। ठीक है, now you have seen that कि यारी is actually moving forward 4 meter per second, और जो दूसरा वाला है जॉर्ज, it is actually moving 10 meters per second in a backward direction, and observer is actually, or a watcher is actually watching them। Now let's begin with the perspective of Yari। ठीक है, now there is no such observer,
Yari is actually observer. ठीक है, what Yari would see that that George is actually moving. So George is actually coming towards him, and the surrounding is actually moving. That is actually coming towards him. Okay. So surrounding, for example, a gate or the next window, not this one, a next window is actually moving towards him. Now the windows is actually taking the speed in opposite direction because Yari is moving in a forward direction. Window is actually coming towards the Yari. So what is the speed of that window? It is actually the same speed of the Yari, but of opposite sign. That means कि जो विंडो है बेसिकली वो यारी के करीब आ रही होगी with the same speed, ठीक है, by which the यारी had observed by an observer, ठीक है, which was at rest. तो अब जो है वो विंडो जो है वो उसके करीब आ रही होगी, देखना जरा, ठीक है, और किस स्पीड से आ रही होगी, -4 वेलोसिटी से आ रही होगी -4 मीटर पर सेकंड, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज दैट कि जो जॉर्ज है he was taking a speed of 10 meters per second when was observed by an observer at rest, but now the observer is actually Yari, so इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है. अब स्पीड कैसे बढ़ जाएगी, बिकॉज यारी अपने अंदर महसूस कर रहा है कि मैं तो विद रिस्पेक्ट टू साइकिल रेस्ट में हूँ, ठीक है. सो हु इज एक्चुअली मूविंग, एक्चुअली जॉर्ज इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स मी, सो विद द स्पीड इंक्रीज्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से मेरे पास है, ठीक है. नाउ सी दिस. Have you seen this? Now the surrounding is actually moving. Before that, the surrounding was not moving because the observer were stationary. Now the surrounding is actually moving since the observer is still stationary, but surrounding is moving because the motion is relative. Okay? So it looks like the observer would feel that I am stationary, but surroundings. Now you have seen that K, the velocity is actually have changed. You can see that K, जो पहले ये लोग मीट कर रहे थे at different position because of different observer, अब ये क्या मीट कर रहे हैं at the zero position. That means कि यारी ये बिलीव कर रहा होगा कि वो 14 meters per second की स्पीड से आ रहा है towards me, so उसकी जो velocity है वो नेगेटिव है और वो मीट करेगा at my origin position. That means कि at the position of where it is actually standing, ठीक है. Now again the third perspective. Third perspective में अगर मैं देखूं तो George is actually now stationary, ठीक है. Now the first window is actually moving towards George with the speed 10 meters per second. That means the surrounding is actually moving 10 meters per second. But what is the velocity of the Yari? Yari is actually moving 14 meters per second. Have you noticed that George before that was moving 14 meters per second in opposite direction, and Yari is actually moving 14 meters per second. Now Yari is actually moving 14 meters per second in a forward direction. You can see that कि दोनों की जो relative velocities है उनका relation क्या है? Their relation is actually equal but opposite in direction. That means the relative velocities of the two observer is in an inertial reference frame would be equals but have different sign, ठीक है. So फिर इसको हम mathematically देखेंगे कि किस तरीके से होगा, ठीक है. So let's begin. What's going to be happening? You can see that the surrounding is actually moving. Very fast. Now what? Okay, all right. अगर आप यहाँ देखें तो जॉर्ज का जो जॉर्ज के रेस्पेक्ट से, ठीक है. Now the Yari is actually moving with positive 14 meters per second. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग भी मूव कर रही हैं, बट सराउंडिंग मूव कर रही हैं -10 meters per second. This what is actually this graph tells you? This graph tells you that Yari is actually moving with very steep line. So one can say it's moving with a 14 meters per second. In each second, it is actually covering 14 meters, and its position is actually continuously changes as the time passes. But George's position is not changing because in a respect in a respect of the observer would be always at rest in his own reference frame. Okay? So I hope you have
एंजॉयड दिस सिमुलेशन। तो इसको फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। ये जस्ट इसलिए था ताकि आप थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी पावरफुल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जॉर्ज मूव नहीं कर रहा था बल्कि यारी मूव कर रहा था और सराउंडिंग मूव कर रही थी। सराउंडिंग किस स्पीड से मूव कर रही थी टूवर्ड्स जॉर्ज विच इज -10, और जॉर्ज किस स्पीड से, सॉरी यारी किस स्पीड से मूव कर रहा था विच इज +14 मीटर्स पर सेकंड।